Let's move to the next interesting example. It's going to be a medium level problem, and the problem is you are given an input of sorted array. You are given an input of sorted array. Sorted array कैसे हो सकती है? For example, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5. Okay, something like that. And you are also given another value called x. X can be any value. For example, x can be 4. You have to return me the value, the first occurrence and the last occurrence of the given number x. Okay. For example, in this case, if I write down 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All right. So the first occurrence of 4 is this one. The last occurrence of 4 is this one. Okay. So your output should be 5, 7. Okay. अपने को एक पेयर रिटर्न करना है, या अपन बोल सकते हैं a vector return करना है of size 2, whichever you seem is easy for you, and return should contain the index. Okay, nice. People are saying binary search. That's amazing. Now tell me, जब भी मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, approach, don't just tell me approach, tell me the time complexity of the approach as well. Time complexity भी सोचो और मुझे बताओ कि क्या हो सकती है. अगर तुमको तुम्हारे एग्जैक्टली करेक्ट लॉगिन सही आ रहा है, अगर तुमको तुम्हारे इंटरव्यूअर ने पूछा कि हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जस्ट उसने ही हैज जस्ट एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग यू विल डू? नाउ दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू? विल यू जंप टू द सॉल्यूशन राइट अवे? No, not necessarily. Brute force is a good advice, but whenever a question is asked in front of you, make sure you ask clarifying questions. Nobody asked me what will happen if x is equals to 9. Nobody asked me what will happen if x is equals to -1. Right? Ask for constraints. Correct, Saurabh. Sahi bol raha hai, buddy. So you have to ask what should I return if the value is, for example, 9, not existing in array at all. What will happen? Should I return 0? No, it's wrong. Should I return what? So ask for clarifying questions, because these clarifying questions can help your interviewer judge you better. अब अगर मैं तुम्हारा इंटरव्यूअर हूं और तुमने मुझे बोला कि what will happen in that case, मुझे समझ आएगा कि you guys are able to think about the problem. You guys are able to have your ways. You understood the problem completely. Okay. So the second thing which you guys have to do after the first thing which you guys have to do after you have heard the question is ask for clarifying questions. क्या कोई edge case तो नहीं है? ठीक है? Just make sure अगर ये question तुमको समझ नहीं आता है तो ask again. There is no harm in that. Ask for corner cases. Exactly. Once you are done with that, then we can start. Then depending upon whether you know the solution or not, you can ask for you can solve for brute force, or you can do an optimization. Okay. So the brute optimization comes later. I mean, if you have time, you can say, sir, I know that this question can be solved using in n square time using this brute force approach if I just do that. But I think there is an optimal solution. An optimal solution can give me answer in log n time. I'm just giving you an example. I mean, I know it's not n square, it's n, but I'm just giving you an example. So again, you are given an input array and you are given an element x. You have to return me the first and the last occurrence. Okay. Now that we have asked the clarifying question, it's time for me to think about the solutions. So input is 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 7. Okay. So let's say this is the input. Understand it. जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा पेन पेपर लेके पहले सोचेंगे उस क्वेश्चन को. डोंट जंप टू द क्वेश्चन राइट अवे. जस्ट थिंक अबाउट द क्वेश्चन फ्रॉम क्लियर माइंड. ओके. जब भी अपने को पता है कि सॉर्टेड एरे गिवन है, व्हेनेवर अ सॉर्टेड एरे इज गिवन, always think about binary search. Always keep binary search in mind that this can come into play. Chalo ji, let's see. So I have to find the first occurrence of element, let's say 2. Okay. So what will I do? In fact,
I have let's say I have to find the first occurrence and last occurrence of element 1. What should I do? Let's try to first figure out the first occurrence of a given element. Okay, let's try to figure out the first occurrence. First occurrence के लिए काम करते हैं अपन लोग 2 pointers बनाते हैं, I is equals to 0 and how many elements are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so your I is equals to 0, J is equals to 8. You try to check बाइनरी सर्च कैसे काम करता है. हम लोग दो एजेस को पकड़ते हैं, we pick 2 edges and try to figure out whether the minimum element is the one which we are looking for or not. ठीक है, so the minimum element is what? 0 plus 8 by 2 is 4. So क्या fourth element 1 के equal है? Answer is no, right? Fourth element is not equals to 1. So we'll try to check कि यार fourth element तो 1 के equal नहीं है. अब क्योंकि मुझे 1 ढूंढना था जो 3 से कम है, इसीलिए I'll try to search in the left subset, not the right subset. Which is clear है. If the middle element is more than the element which you're looking for, go to the left, otherwise go to right. ठीक है, so now our array becomes 1 2 2. Okay, so I is still 0, but J becomes what? J becomes 3, mid minus 1. Okay, so now let's check. Shoot, middle element is 0 plus 3 by 2, which is equals to 1. Check whether the first element is equals to the element I'm finding or not. It's not. So move to what part? Move to this part. Again, check whether 1 I equals 0, J equals 0, mid becomes 0, right? Because 0 plus 0 by 2 is equals to 0. So kya this is the element which I was looking for? Answer is yes. In that case, you got the first occurrence. Okay, now that you have the first occurrence, you can try to solve this question in 2 ways. I mean 2 loops. First, try to find the first occurrence in login time, then find the last occurrence in login time as well. You can do this in 1 iteration as well. मैं इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन तुमको कराऊंगा, तुम मुझे इसका इटरेटिव सॉल्यूशन होमवर्क में लिख के लाओगे. क्लियर है? ये चीज लिख लो. आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस यूजिंग रिकर्जन. यू गाइस हैव टू डू इट यूजिंग आइटरेशन. ठीक है, या फिर एनीवे चलो मैं इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन तुमको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं. इसका अपन कोड करेंगे, बहुत फटाफट से मैं कोड करूंगा. ठीक है, फर्स्ट एंड class dot cpp. Okay, I'm going to copy the template. So this is the input statement you have. You have the first occurrence, you have a vector as an input. Okay, you have the start and the end. In fact, it can be something like that. Vector int address of numbers and int target. Let's say this is what you have to find. And it not the first occurrence, first and last occurrence, and I'm going to return a vector. Let's say vector int. Okay, so this is the question which is given to you. I'm going to write 2 functions, first occurrence and the last occurrence. Okay, so I'm going to write 2 functions, first and last occurrence. सबसे पहले अपन क्या करेंगे? You will get the first occurrence, which is equals to first occurrence, which has numbers, which has 0 and numbers dot size -1, and you have target. Okay, and you have last occurrence. Again, the same kind of parameters which you have to pass, right? Nums dot size and size -1, and you have target. Okay, so this is how an output looks like, and you can return first comma last, and we are done. That's how the code is going to look like, guys. Okay, चलिए जी, अब मैं काम करता हूँ, मैं फर्स्ट occurrence लिखूंगा और उसके बाद मैं दिखाता हूँ लास्ट occurrence करते टाइम अपन लोग चेंज कैसे करेंगे. ठीक है, so let's get started. When will we know that a particular element does not exist? अगर start की वैल्यू, यहाँ पे कंडीशंस हो सकती हैं, स्टार्ट की वैल्यू एंड से बड़ी हो सकती है,
ठीक, अगर ये कंडीशन आती है भाई साहब तो क्या होगा, इसका मतलब अपने को एलिमेंट नहीं मिला, तो अपन एक काम करते हैं -1 रिटर्न करते हैं। ठीक है, else if start is equals to end, अगर ये कंडीशन आई है भाई साहब तो व्हाट विल हैपन, तो अपन चेक करेंगे क्या करंट एलिमेंट टारगेट के इक्वल था, अगर था तो हम लोग स्टार्ट रिटर्न करेंगे, वरना हम लोग -1 रिटर्न करेंगे। Is this part is clear? And else the final condition, ये कंडीशन कब आएगी, जब स्टार्ट की वैल्यू लेस देन एंड है, and this is a sunny case, मतलब this is a good case। ठीक है, in this case what's going to happen is अपन लोग वही स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मिड कैलकुलेट करेंगे which is start plus end minus start by 2। ओके, हम लोगों ने मिड वैल्यू कैलकुलेट की, स्टार्ट प्लस एंड बाय 2। नाउ व्हाट विल डू, वी विल चेक इन केस इफ nums mid is less than target, else if nums mid is greater than target, else final condition, this condition will come and nums mid is equals to target। करेक्ट, ये तीन कंडीशंस आ सकती हैं भाई लोग। सो लेट्स चेक, if nums mid is less than target, what will happen? If nums mid is less than target, that means my target is actually bigger value as compared to the middle element, correct? So we'll try to figure out the first occurrence in the right hand side। okay, find the element in the right section of array, correct? So what I'll do, we'll return first occurrence, oh my bad, first occurrence nums start की value will become what, mid plus 1, end की value will remain same and target is equals to target। awesome। अगर इसका opposite case होता है, that means if mid value is actually bigger than the target value, that means find the element in the left section, in the left section of array। okay, and what I'll do is instead of finding in the first half, I'll try to find it, instead of finding in the second half, I'll try to find in first half। okay, this is how it's going to look like guys। तो ये वाला पार्ट भी क्लियर है, but now comes an interesting part। what if the current element is giving you the value, in that case what should happen, right? अब ऐसा हो सकता है कि the current element which you are getting, it's actually the real deal, right? ऐसा हो सकता है कि ये जो current element है वही first occurrence है। now we don't know whether the current element is the first occurrence or not। ठीक है, अपने सामने ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये करंट एलिमेंट का यही फर्स्ट अकरेंस तो नहीं है। इन दैट केस एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर मिड की वैल्यू 0 हो गई है, इसका मतलब पक्का यही फर्स्ट अकरेंस है, मानते हो? इफ मिड हैज बिकम 0 दैट मींस रिटर्न मिड, दिस इज द फर्स्ट अकरेंस। कूल। अच्छा, अगर मिड की वैल्यू 0 से बड़ी है, ऐसा तो हो नहीं सकता 0 से छोटी हो जाए, करेक्ट? सो अब अगला केस क्या है, अब चेक करते हैं। अगर मिड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है एंड nums mid minus 1 is less than nums mid है, अगर ये कंडीशन ट्रू है, मतलब मिड एलिमेंट से जो पहले वाला एलिमेंट है, जस्ट पहले वाला एलिमेंट, मिड -1 वाला एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट मेरे करंट एलिमेंट से छोटा निकलता है, ठीक है, सपोज करो मैं 5 ढूंढ रहा था इस एरे के अंदर, ठीक है, 5 6 7 4, ठीक है, और मैं अभी इस वाले इंडेक्स पे हूं और मुझे पता करना है 5 इज द फर्स्ट ऑकरेंस और नॉट।
तो मैं इससे पहले एलिमेंट से पूछ लूंगा कि क्या तू इससे छोटा तो नहीं है। अगर 5 से छोटा एलिमेंट है इससे पहले, इसका मतलब ये पक्का फर्स्ट ऑकरेंस है। ठीक है, सो दूसरी कंडीशन से ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये फर्स्ट है या नहीं है। तो अपन इस केस में भी क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न मिड। क्लियर, सही है। एक काम करते हैं, दोनों की दोनों कंडीशंस को क्लब कर देते हैं एक साथ। ठीक है, दोनों सेम ही रिजल्ट दे रही हैं, तो एक काम करते हैं, इनको क्लब कर देते हैं एक साथ। अगर ये कंडीशन आती है भाई साहब, तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, वरना रिटर्न फर्स्ट ऑकरेंस। अब वरना कहां ढूंढने चले जाओ, फर्स्ट हाफ के अंदर। ठीक है, तो अपन यही कंडीशन को वापस से यहाँ पे कॉपी कर देंगे। फर्स्ट ऑकरेंस हो गई है जी। एक काम करते हैं, लेट्स कॉपी दिस कोड। In fact, let's copy this particular piece of code and let's change it for last occurrence. अब मुझे बताओ last occurrence में क्या क्या changes आएंगे? What are the changes which I should do in the last occurrence code? ये कंडीशन तो ठीक है, ये भी कंडीशन ठीक है। ठीक है, ग्रेटर देन कंडीशन हो गया, इक्वल कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे वाला कंडीशन चेक कर लेते हैं, हमने को लास्ट occurrence ढूंढना है। ठीक है, तो yes, if nums mid is less than target, that means target is a greater value, क्या ये कंडीशन चेंज होगी? अगर अभी करंट एलिमेंट जो मैं ढूंढ रहा हूं, सो अगर करंट एलिमेंट छोटा है एज कंपेयर टू द एलिमेंट व्हिच आई एम फाइंडिंग, राइट, इन दैट केस आई हैव टू गो टू द राइट। अभी भी बाइनरी कंडीशन, बाइनरी सर्च की कंडीशन वैलिड रहेगी, अभी भी दीज कंडीशंस आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, राइट। If you do not find, if the middle element is small, you have to go to the right, that's for sure. If the current element is large, you have to go to the left, that's for sure. डिफरेंस आएगा इस पर्टिकुलर पीस में, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, है ना। सो अब अपने को लास्ट वाले पार्ट पे जाना है, तो मिड इज इक्वल टू 0 नहीं, मिड इज इक्वल टू लास्ट चेक करना है अपने को। ठीक है, कि क्या मिड एंड के इक्वल तो नहीं हो गया। अगर मिड की वैल्यू लास्ट एलिमेंट हो गई है, या इसका मतलब वो लास्ट अकरेंस है, या फिर सॉरी एक्सक्यूज मी गाइस, या फिर if mid plus 1 is less than equals to end and mid is less than mid plus 1, in that case also you return mid, correct? Otherwise last occurrence mid plus 1 to end। एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा उसके थ्रू देख लेते हैं। सपोज करो दो कंडीशंस में, आई एम गोइंग टू राइट टू डिफरेंट केसेस। ओके, सो दिस इज वन टेस्ट केस इन व्हिच इट्स 1 1 1 2 3 4। ओके, लेट्स से दिस इज एन इनपुट एंड दिस इज एन इनपुट, 2 3 4 4 4, लेट्स से 4, दैट्स इट। ठीक है, इन दिस केस find out the first occurrence. The first occurrence is going to be 0 and the last occurrence is going to be 2. Okay, तो अपन लोग एक काम करते हैं, चेक करते हैं कि कंडीशन क्या है। तो अब कोड के अंदर देखते हैं, कोड क्या कह रहा है। इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड में देखते हैं, ये लाइन 67 और हम लोग चेक करेंगे ये लाइन कहाँ गया, जस्ट ये लाइन विच इज 32। ये दोनों लाइन हम लोग के लिए इंटरेस्टिंग है, करेक्ट। लास्ट अकरेंस का कोड है ना, तो एक काम करते हैं, अपने लास्ट अकरेंस के कोड को एक बार चला के देखते हैं। ठीक है, ये मेरी कंडीशन है, तो स्टार्ट की वैल्यू 0, एंड की वैल्यू 4। ठीक है, तो स्टार्ट की वैल्यू छोटी है अभी एंड से, तो अपन लोग चल सकते हैं। तो अपन मिड कैलकुलेट करते हैं, मिड इज इक्वल्स टू 0 + 4/2 इज 2। अपने को ये वैल्यू मिल गई, राइट। अब अपन अपने उसी वाले कोड के अंदर आ गए। ठीक है, अपने को लास्ट अकरेंस ढूंढनी है, यहाँ पे मैं लास्ट अकरेंस के कोड की बात कर रहा हूँ बड़ी। तो अपन इस पर्टिकुलर पीस पे आ गए, हम मिड पे गए और हमको पता चला कि whether this particular element is the last occurrence or not। ठीक है, हम लोग लास्ट अकरेंस के लिए चेक कर रहे थे, राइट। तो अगर सपोज करो इस तरह की कंडीशन है जिसके अंदर लास्ट एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है, तो हाउ विल यू चेक whether this particular element is the one or not। सपोज करो तुम कभी यहाँ पे आए, उसके बाद यहाँ पे दो कंडीशन चेक हो रही है, क्या ये लास्ट एलिमेंट है। अगर ये लास्ट एलिमेंट है एरे का, इसका मतलब तो डेफिनेटली ये लास्ट अकरेंस है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग कुछ इस तरह की कंडीशंस में जाएं
जहां पे हमारा मिड सपोज करो यहाँ पहुंच गया, हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, इस पोजीशन पे हैं. हाउ विल यू फिगर आउट whether this is the last occurrence or not? अब मुझे कंफर्म करना है ये फोर्थ एलिमेंट क्या ये लास्ट एलिमेंट है या नहीं है. तो हम लोग क्या कैसे करेंगे, मिड प्लस 1 के पास जाओ और पूछो कि क्या वो उससे बड़ी वैल्यू है या नहीं है. अगर वो उससे बड़ी वैल्यू निकली, इसका मतलब तो कंफर्म यही वाला occurrence लास्ट occurrence है. चलिए जी, तो मैंने आपको फर्स्ट occurrence करा दिया. अच्छा एक बात बताओ, इस कोड को मैं ऑप्टिमाइज कैसे करूं. सपोज करो आपके एक चीज तो और कंफर्म है कि अगर मैं इसको एक आइटरेशन में कर दूंगा तो ये और ऑप्टिमाइज हो जाएगी, n log n में हो सकती है ये. बट क्या मैं अभी भी इस कोड को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं? कैन आई ऑप्टिमाइज इट राइट नाउ? मतलब हो सकता है बहुत बड़ी एरे हो, ठीक है, कुछ इस तरह का केस समझ लो कि तुम्हारी एरे के अंदर 10,000 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, लेट्स से योर एरे हैज 10,000 एलिमेंट्स और लास्ट एलिमेंट लेट्स से 36 है, इससे पहले 35 है, बाकी सारे एलिमेंट्स का मुझे नहीं पता, लास्ट एलिमेंट 36 है और आपको x की वैल्यू 36 का फर्स्ट और लास्ट occurrence ढूंढना है. तो डज इट मेक सेंस फॉर यू टू सर्च इन दिस पर्टिकुलर एरिया वंस यू हैव फिगर्ड आउट कि फर्स्ट occurrence तो यहाँ पे है, तो लास्ट occurrence तो फर्स्ट occurrence के बाद ही होगा ना, ऐसा तो हो नहीं सकता उसके पहले हो, करेक्ट. तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट ये कर सकते हैं कि हम लोग 0 और num size -1 से स्टार्ट ना करके हम लोग फर्स्ट और num size -1 से स्टार्ट करें. ये बहुत छोटा सा अपडेट है, बट इट कैन sometimes these updates are really helpful in big projects, ठीक है. It does not make sense for us to look for the 0 to first -1 because 0 to first -1 तो पक्का वहां पे लास्ट occurrence नहीं मिलेगा, does not make sense. So this my friend is the code for your first and last occurrence. इस क्वेश्चन को मैंने रिकर्सिव तरह से सॉल्व किया है,